Welcome to the PIDE webinar. आपको सबको पता है कि PIDE webinars regularly करता है to try and create a conversation on research and understanding of Pakistani problems. तो अभी हमारे पास ये भी आप सबको मालूम है कि बहुत बड़ा फ्लड पाकिस्तान में आया है और अभी तक बहुत सारे बंदे डिस्प्लेस्ड हैं. अभी तक बहुत वो है क्या कहते हैं मुश्किलात में है पाकिस्तान और काफी बातें हो रही हैं कि हम इसमें से क्या रेपरेशन मिलेंगी. वैसे इन एनी केस ठीक तो करानी है चीजें, तो बहुत सारी रिपेयर के डैमेजेस, कंपनसेशन वगैरह वगैरह का प्रॉब्लम है. तो इस सिलसिले में असद अली शाह साहब हैं. इन्होंने माशाल्लाह इज अ वेल नोन अकाउंटेंट. डिलॉयट जो बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है उसके पार्टनर भी थे और अब he is doing many things including his own I think app called B Filer जो कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुरू हो जाए. तो he's not only a well known accountant but also an entrepreneur and he takes a keen interest in policy matters. तो ये इन्होंने कुछ इस पे काम किया है कि फ्लड के जो इश्यूज हैं इस पे क्या flood disaster management कैसे करनी है. So let's hear from Asad Saab and then let's discuss the flood. Asad Saab, over to you. First of all, thank you very much for organizing this. As you said, it has also been called a flood of biblical proportion. I think one of the greatest disaster that at least I have seen in my lifetime in Pakistan and especially Sindh. So the topic, the title of this presentation is the flood disaster, whether caused by, obviously it's caused by climate change, but escalated by our poor governance and management. So that's broadly what I'm going to cover. This is what is the content of my presentation. As an accountant, I usually start with a disclaimer. Then we'll talk about the impact of this flood disaster, which is very well known, and peculiar nature of this disaster and what in certain ways should be a way forward from the global perspective, and why we need to be engaged with the global climate change discussions, why it is important, and what should be our approach. I have also raised some questions on that. And then I'll cover our disaster management system, its inherent weaknesses, and of course, then more focused on the issues that we came across in Sindh, because most of the disaster has happened in Sindh, as I will discuss later. And also, then finally, I will discuss the serious weaknesses in governance and management, which escalate our disasters, or we continue to have moved from one disaster to the other. And finally, what should be the way forward. So my disclaimer and my perspective on this topic is, let me confess that I'm not a disaster management expert. And despite that, PIDE has given me the opportunity to discuss it. But I'm doing it purely, while I'm not an expert, but I have been engaged, you know, as a professional accountant, as an auditor. मैं review करता रहा हूँ disaster management policies and disaster management frameworks, because ये अब पिछले, this is an evolving subject, but for many years now, it is very common for major corporates to, you know, have disaster management, you know, as part of the risk management. So, but my approach in this and in most of the subjects is described, what was described by Stephen Hawking in his very famous quote. As he said, I am just a child who has never grown up. I will keep asking these how and why questions. Occasionally, I get an answer. So basically, ये subject भी काफी complex है, काफी important है, and बहुत ही important है for our country and for our, you know, for all of us.
And I think we need to, try to understand it. And understanding comes by raising questions. So I don't have most of the answers to this yet. While my approach will be to give my views, and I do agree that there could be other views. And my approach will be to raise questions that we must address if we have to, improve. As we all know, I think as far as the impact of current floods, the disaster, मेरे ख्याल में 2000 से ज़्यादा figure हो गई है, people who have died, unfortunately. My estimate is that it is highly underreported. The casualty is likely to be double or three times of the figures that have been quoted. And because there has been widespread disease, malaria and dengue and various diseases, and as a result, obviously, more people have died and a lot of people have fallen sick, which are not being reported as casualty of the floods. The figures that are being quoted, 33 million people have been displaced, 3 million houses fully or partially destroyed. So huge damage to our agriculture. As we know, agriculture is our bread and butter. The livestock and animals, huge damage to our infrastructure. And all of that, I think the initial estimate of the cost given is $32 billion. I understand that Ministry of Planning is doing a more thorough exercise to estimate the damage. But this $32 billion means it's more than or equal to entire exports of the country. Tax collections are also this year planned at 7 trillion, so it's more than that. And the worst thing is that all of that losses, are actually have impacted the most vulnerable population of the country, the poorest of the poor. They are the they are the people who are mostly affected. And coupled with that, we know that we are also going through the highest ever inflation in the country, in an IMF program, so the growth is stagnant. So literally, on the one hand, we have stagnant economy, no opportunities or very few opportunities for employment of the poor. And on the other, this is such a huge disaster that we have faced. It will, of course, have huge ramifications and implications on our other economic and social indicators. Pakistan's HDI, as we know, is one of the lowest in the world. The poverty is going to increase, and our pace of development is going to be undermined. So let me first broadly discuss this disaster from the global perspective and what should be our way forward from the climate change discussions that are going on worldwide. Now, we know that it is a well-acknowledged fact that it is a disaster caused by the climate change. Everyone has accepted it. It's universally agreed. We also had, because of the size, it's being quoted, worldwide at the UN level and different countries. I saw it in World Bank, ADB, and other reports everywhere. This is being quoted as one of the biggest disasters. So Pakistan has, as far as the climate change is concerned, we cause very little adverse impact to the global climate change, but obviously we suffer a great deal from it. As we know that our, emissions, CO2 emissions or greenhouse gas emissions, as they're called, is hardly 0.6%, but we are one of the biggest impacted country, one of the most vulnerable country. We were considered one of the top 10
But I think after this one, probably we are one of the top 5 or one of the top 3. Our rating is likely to increase. However, I think the questions are also being raised locally as well as internationally that while this is a huge, unprecedented climate change disaster, but it was escalated many times due to our own negligence. So it's partly a man-made disaster as well. So question is, what needs to be done because we need, obviously, is $32 billion, huge support from the international community to finance the rescue, restoration, rehabilitation effort. So what should be our strategy? Are we doing right in approaching the global community? And what is our learning for the future? How can we mitigate, reduce the risk of such disasters? So talking about financing, I think part of this disaster obviously needs to be financed from our own resources. And I'm of the firm view that agar hum is disaster ko timely address karte, although we didn't prepare for it, we didn't properly plan for it. Our risk assessment, our planning, which I'll talk later when I talk about our disaster management systems, were inadequate. But the way we have tackled, this disaster, that has also escalated its impact. क्योंकि अगर जब ये disaster हो रहा था, उस वक्त हम timely decisions करते और जो basically the water that had accumulated, उसको timely de-water करते, तो मेरे ख्याल में that investment would have really paid a lot of dividends in terms of reduction in the damage and the disaster. Of course, we also need to get help from the international community. And we have been trying, I understand, but somehow the results have not been as good as one would have expected. In fact, this disaster is 3 or 4 times bigger than 2010 floods. But somehow the response that we have, or is martaba to, I think credit to the government and the leadership that we were able to raise our voice, and United Nations Secretary General came here and many other eminent personalities came here. It was discussed in the UN. President Biden also called for it. लेकिन उसके बावजूद जो call दी गई by the UN to raise $600 million, उसका भी मेरे ख्याल में जो मेरी information है, perhaps some of the audience can correct me if I'm wrong, मेरा तो ख्याल है कि 20% भी उसका receive नहीं हुआ है. So, and then finally, of course, what is the learning from disaster? See, each disaster causes huge, it's a huge calamity, but there is always a learning from disasters. There are always opportunities to improve ourselves from disaster, provided we learn from the disasters and improve the way we live, the way we govern ourselves, the way we manage ourselves. See, next. Next slide, please. So talking about global climate change, we know that I think that there's global warming happening due to greenhouse gases, CO2 emissions. This is reality. A rise in temperature is posing huge risk to the planet. And without going into too much details, more of a technical topic, not going to spend too much time on it. But there is, I must say that this topic, like many topics, has been recognized, realized by the Western countries. The countries who have actually caused the damage also have realization
of that we are destroying our planet. So it is also known that the rise in temperature is because of the development that has happened during the last 200 years from the Industrial Revolution, and because of the burning of fossil fuels largely, and some other developmental activities, but largely in the West. हमारा तो उसमें बहुत ही कम impact है, as I mentioned, and same is the case with many other developing countries. However, we need, obviously, the Western countries, people have realized that, the way we are living, it's a huge risk to the planet and their future generations. If the planet goes, if you're all dead, then they're also dead who are more developed. The issue is that countries like Pakistan, हमने तो कोई fossil fuels burn ही नहीं किए, and हमने अपने आप को improve ही नहीं किया, तो क्या हमारी strategy भी वही होनी चाहिए जो Western countries की है? क्योंकि ये जो UN के forum पे ये जो climate conferences होती हैं, जिसको अभी COP27 होने वाली है, उससे पहले 26 और हो चुकी हैं, उसमें सारी गवर्नमेंट्स जो हैं, सारी कंट्रीज से कहा जाता है कि आप फॉसिल फ्यूल्स बंद करना, आप अपनी डेवलपमेंट को रिड्यूस कर दें. तो ये मैं इसलिए हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि इसमें कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, for instance, I'll give you an example. This is very important and requires another discussion. See, Pakistan का सबसे बड़ा issue, one of the biggest issue is our energy crisis. And that energy crisis is because हम अपने fossil fuel हमारे पास नहीं हैं, या अगर है तो हमने discover नहीं किए थे और कम किए थे. And we import, we don't have energy security, and इस वक्त जो बहुत बड़ा crisis है इसलिए कि हम gas भी import करते हैं, fuel भी import करते हैं. Compared to that, फर्क ये है, one big reason why India and China are not in that kind of crisis and they are economically better is because their energy generation is from their indigenous coal. और हमने अपना जो थर कोल है, which is a huge resource, 175 billion tons, अगर हम 25 साल पहले इसको शुरू कर देते या मतलब 20 साल पहले, तो according to Angro's estimate, annually हम $4-5 billion सेव कर सकते थे. और आप ये सोचें, अभी भी इस वक्त जो हमने थर कोल शुरू किया है, we are just producing 660 megawatts out of 30,000 megawatts or so, not even 2 or 3%. लेकिन जो हमारी generation है from this is the lowest as per the NTDC merit order. Our cost of generation, 80% of the electricity, by the way, cost is from generation. So our generation cost from the fuel that we burn of third coal is only 3 rupees. Compared to that, जो हम imported coal या gas या बाकी generate करते हैं, उसमें it's 35 to 40 rupees. So you can imagine, and compared to that, India तकरीबन 50% अपना जनरेट जो है कोल से करता है अभी भी, और चाइना भी 50%. India is generating 200,000 megawatts compared to ours. Maybe now अभी हबको का प्लांट आया है तो 1000 megawatts हो जाएगा हमारा. And इसी तरीके से China is burning 4 billion tons of coal even now compared to our just 3.6 million tons last year. Next. So I just touched this subject because we need to be careful about, about our energy future. अगर हम ये कहें कि जी हम सिर्फ fossil fuels burn नहीं करेंगे and we will only go for the renewables. So renewables are no doubt cheaper, but they do not provide base load. We have to be mindful. That is why
developing countries, and they recognize they will take longer, to do away with the fossil fuels. And India and China are not agreeing to, and they are continuing to rely on this. So we need to be careful on that. So I'll very briefly, Paris Accord, which is, I think, out of all these UN sponsored climate discussions, this is the only, this is the 2015 agreement, which is considered binding global climate change agreement. The aim is to strengthen global response to climate change and rise in temperature, to contain the rise in temperature to less than 2 degrees Celsius, preferably below 1.5. And obviously, a lot of people are saying that it should be net zero. I don't know how far we'll be able to achieve. So obviously, as we are sitting, or I think there was some kind of agreement in this, that developed countries intend to continue their existing collective goal to mobilize $100 billion per year by 2020 and extend this until 2025. So a new higher goal will be set after this period. अब ये agreement है, अगर ये, I don't think they have met this agreement. And as I said, and as we know, that they are the people who have caused this damage. So इसीलिए, our leadership was also talking about reparations or some kind of compensation. I think morally we have a justification and that we need some compensation from this money. And as we all know, Egypt may be in early November, there is COP27 happening. And I hope that our leadership raises these matters and makes a persuasive case, because we do need international funding to meet this colossal, huge disaster that we have had. See, next. So some questions that I think which we need to raise is why response from global community is inadequate. The world has recognized the scale of disaster in Pakistan, one of the biggest, yet the support and contribution is so poor. Despite UN Secretary General, as I said, coming to Pakistan and, President of France, offering to hold a conference, etc., etc. अभी तक इसका impact जो है ना वो नहीं आ रहा है, and we have not been able to mobilize that much. So ये reparations और ये सारे questions I think I've already talked about. So what is the reason? Is it the trust issue, or is it donor fatigue issue? Or is it that Pakistan की हमारी कोई reputation in terms of managing ourselves, या ये escalate जो हमने किया है? Or I think the concern that जो पैसे हमें मिलेंगे शायद वो beneficiaries को नहीं मिलेंगे, because I also know many of the donors, in fact जो पैसे आए भी हैं, काफी support जो है वो या तो in kind आ रही है, या organizations like USAID for instance, I know वो खुद कोशिश करके रिलीफ और रिहेबिलिटेशन एफर्ट कर रहे हैं, many of the countries. So हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं उनके ऊपर जो है ट्रस्ट काफी कम होता जा रहा है. So I think that is an issue that we need to be concerned about. Next, please. So let me just briefly discuss the reason, our disaster management system. And as we know that we have a comprehensive framework legally, कागजों में हमारा जो disaster management system है वो बहुत अच्छा है. I was amazed. अगर आप ये act पढ़ेंगे, NDM Act, National Disaster Management Act, जो कि 2010 का act है, but I think it started, ये organizations उससे पहले बन गई थी. और as a consequence, as we all know, in 2005, we had one of the major disasters in terms of casualty. Nearly 100,000 people died in the earthquake in Kashmir and northern areas. So, उसके बाद there was a realization, and as usually happens,
ये इंटरनेशनल डोनर्स के हेल्प से हमने ये एक्ट बनाए जिसके थ्रू there is a national disaster management committee headed by the Prime Minister, comprising of all the ministers, I think, and all the chief ministers and all the top guns. और ये that is also the problem कि सारी जो important organizations हैं और इतनी सारी हैं कि वो ज्यादातर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहा होता है. मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं होता होगा कि वो कितनी कमीशन और कमेटीज के चेयरमैन हैं. एंड द सेम इज द केस विद द चीफ मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स. तो और इसी तरीके से ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने डिफाइन किया है कि डिजास्टर क्या है. हर साल इन्होंने कहा कि हम उसको डिजास्टर मैनेजमेंट को आप देखें डिफाइन किया है. इट मींस प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन. इन्होंने सारी चीजें बातें की हैं. डिजास्टर को डिफाइन भी किया है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एनडीसी जो जो कमीशन है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दे आर सपोज्ड टू मीट आई सपोज वेरी फ्रीक्वेंटली. आई डोंट नो मिलते भी हैं कि नहीं. पॉलिसीज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट बनानी होती हैं. नेशनल प्लान बनाना चाहिए. आई डिडंट सी एनी national plan on the website of National Disaster Management Authority. There was a monsoons plan, but I don't think it's a monsoon plan or साल शायद बनाते हैं. But there has to be a broad national disaster plan based on risk and scenario analysis. जिस तरह से होना चाहिए, मुझे वो नजर नहीं आया, वो preparedness नजर नहीं आई. So they have to then issue guidelines to federal departments and provincial authorities, arrange for funding of to mitigate the measures and preparedness planning. I don't know ये चीजें होती हैं कि नहीं. Provide support to other countries also. It even goes on. हम खुद तो नहीं manage कर सकते अपना, but it says that we are supposed to support other countries' disasters as well, as the federal government determines, and take such other measures of prevention of disaster or the mitigation of preparedness and capacity building for dealing with the disaster as it may consider necessary. Next, please. Next slide. So ये सारी responsibilities defined हैं. National Commission की भी, NDMA की भी, then provincial disaster authorities हैं उनकी भी, और even to district disaster committees भी हैं उनकी भी है. ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही comprehensive. I'll not, I think in the interest of time, I will just move on. But suffices to say कि जो प्लानिंग होनी चाहिए, जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो वहाँ पर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो नजर नहीं आई. आई डिडंट सी एनी विजिबिलिटी. आई हैव बीन अराउंड most of the areas, at least in my district, which is Kharagpur. I didn't see any presence of NDMA or PDMA in in the disaster areas. आगे चलें. So this talks about the contents of the national plan, disaster plan, which, as I said, इस तरह से कोई plan नहीं बना हुआ. This is an obligation of the National Disaster Commission. उन्होंने नहीं किया. Next. So I think I've already covered this कि हमारी जो disaster management system है, ये authorities हैं, they've not delivered. The key issue in my view is bad composition. I think not adequate composition of the NDC. उसमें कोई external experts नहीं हैं. मुझे लगता है सारे ministers हैं और prime minister है who is not supposed to know everything. So they don't have a very good understanding or training of the disaster management. अच्छा, इस पे there is huge material available on disaster management in the private sector, in the corporate sector. All good organizations are supposed to have effective disaster management. In fact, banks में, large organizations में, business continuity plan
is very, very critical. It is mandatory. And disaster recovery and management plans are essential part. Not only disaster plans are prepared, but they are also tested, under different circumstances, and all kinds of situations are envisaged. G, next, please. So let's again come back to the nature of our current disaster. एक तो प्रॉब्लम ये हुआ कि this current disaster, usually जो हमारा flood disaster होता रहा है in the past, it has mostly been riverine floods, जो कि हम I think over 100 years जो है वो हर 5वें 10वें साल floods आते हैं. वो उसका हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, वापडा है, उनको अच्छा खासा आइडिया है और वो I think manage हो जाता है. One issue was that this time this flood was not caused by the riverine flood, but it was the heavy downpour, very, very heavy rains, 400, 500 times of normal in certain areas. Acha, the Met Department had also, I think, provided some warnings, but maybe not that much. But हमारी जो preparations थी वो बिल्कुल inadequate नहीं थी. And as I said, हमारी जो planning and the biggest issue जो है, क्योंकि पास में सारे floods जो है riverine होते हैं, तो मेरे ख्याल में सारा focus हमारा river side पे होता है. Our irrigation departments, who are the main department who manage floods, उनका ड्रेनेज डिपार्टमेंट जो है बहुत ही छोटा सा डिपार्टमेंट है सिंध में, एटलीस्ट उसकी कोई फंडिंग भी नहीं होती और ड्रेनेज पे हमारा कोई फोकस नहीं था. तो आई थिंक दैट इज वन रीजन, बिकॉज सिंध खास तरह से, क्योंकि सिंध इज द ड्रेन ऑफ द इंटायर कंट्री, उसमें ड्रेनेज का आई विल टॉक अबाउट इट लिटिल बिट लेटर ऑल्सो, देयर इज वन अदर स्लाइड. बट हैविंग सेड दैट, अर्बन फ्लडिंग कराची में तो हर 5 साल आती है, और ये बल्कि जो मानसून प्लान था, टू देयर क्रेडिट, ये उन्होंने बात की थी कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है इन लार्जर सिटीज लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात की थी, बट नॉट ऑफ द सेकेंडरी सिटीज वेयर एक्चुअली दैट हैपेंड. सो नेक्स्ट प्लीज. The next slide. So this is the map that I saw on the United Nations Satellite Center, which says that nearly 1/3 of Pakistan, 75,000 square kilometers, 9% of Pakistan, not 1/3, 9% of Pakistan, and as per USAID, about 32,800 square miles, about 10% of Pakistan was flooded. But if you look at the map of Pakistan, उसमें अगर आप देखेंगे ये red color, तो you will find कि सिंध जो है वो overwhelmingly इससे impact हुआ है. और अगर सिंध की अगर आपको geography थोड़ी सी idea हो, तो सिंध का सारा जो developed area है, ये this is around river Indus, जिसको हम पक्का एरिया कहते हैं. तो वो पक्का एरिया ऑलमोस्ट 100% जो है ना वो इससे इम्पैक्ट हो गया, बिकॉज जो वाइट एरिया है ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द लेफ्ट बैंक, जो इंडिया के बॉर्डर साइड पे है वो डेजर्ट है. ऑन द राइट बैंक जो वाइट एरिया है दैट इज नियरिंग बलूचिस्तान, ये हिली एरिया है, वहाँ से भी जो है वो सारा पानी जो है ना वो वहीं कंसंट्रेट होता है. तो यू कैन सी how it has impacted Sindh. Next, please. Next slide. So as I said, almost 100% of Sindh Pakka area was submerged. Actually, we have to understand that जो हमारी geography है, Sindh is the drain of the entire country. Whether it is melting of glaciers in the northern areas or rains in northern areas, KP, AJK,
Punjab, Balochistan, or Western India, all of that water goes through Sindh. और उसके अलावा जो ऊपर से पानी आता है through rains, that also stays here. The problem is that Sindh, millions of years ago, big portion was part of the sea. So it is at the altitudes, almost same altitude as the sea level. So that is the reason that 90% of the province, or at least almost 100% of the Pakka area was submerged. And even today, I think 30% of areas is still submerged. And that is where I think our management has been pathetic. Many areas, especially in my district, Khairpur, it is unlikely कि rabi or wheat crop जो है वो हो सकेगा. जो भी standing crops थी, cotton crop हो गया या rice था या हमारे यहाँ dates था, that was totally destroyed. और अभी रबी क्रॉप जो है ना वो भी बहुत सारे एरियाज में होना बड़ा मुश्किल है, which is obviously going to compound the food security issue that we have. Next. So the causes of disaster escalation, as I said, our drainage system is pathetic. It's disastrously inadequate. Very small part of irrigation department, virtually no funding. जो हमारे कुछ ड्रेनेज बने हुए हैं, ड्रेन्स हैं और वो भी 60s के बने हुए हैं, लेकिन वो सारे उनकी डिसल्टेशन नहीं हुई, वो पंपिंग स्टेशंस नहीं चल रही थी, मतलब दे वर डिसफंक्शनल और कोई हमारी उसके लिए प्लानिंग नहीं थी अनफॉर्चुनेटली. सेकेंडली, जो डेवलपमेंट हमारी हुई है ओवरऑल पाकिस्तान में और खास तरह से सिंध में, जो नेचुरल वाटरवेज होते थे हमारे, उनको बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, रोड्स, ब्रिज रोड्स एंड इंक्रोचमेंट एंड हाउसिंग, जिस तरह से हमने बनाई है विदाउट कंसिडरेशन ऑफ वाटर फ्लोज, दैट हैज एक्चुअली स्टॉप्ड द वाटर फ्लोज, द नेचुरल pathways, and because of which I think the problem has compounded. It was very, very surprising when I tried to find out whether we have any, hydrologists are the people who understand the water flows and the water levels. So when the crisis came, there was, I think we are still clueless कि बहुत सारा जो पानी खड़ा हुआ है उसको हम कैसे drain करेंगे. There is always a way to drain it. So one of the biggest disaster in Sindh is we are still clueless on how to dewater. जो कि many of the things were simpler. कुछ चीजें हमने आस्ता आस्ता की हैं, pumping बढ़ाई है, but अगर हम उसी वक्त investment करते dewatering की और कुछ out of box thinking करते, कुछ सोचते और initiatives लेते, तो मेरे ख्याल में काफी बेहतरी हो सकती थी. Unfortunately, we neither had the contingency plans nor we have initiative to do our, crisis management to evacuate water. See, next. So poor strategy in disaster management, I've already talked about it. The most सबसे critical strategy this disaster, obviously apart from rescuing people who were submerged, were marooned, was dewatering. How to dewater cities, towns, villages, agriculture fields, which unfortunately has been pathetically managed. I would say mismanaged. There has been, हुआ ये है कि हमारा governance जो है, next slide I will further talk about it. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि हमने there is a tendency, एक तो सिस्टम सारे हमने गोरों ने जो दिए थे वो उस जमाने के हिसाब से ठीक थे, जो लॉज थे, उनके सिस्टम्स थे, वो अभी तक वो डिप्टी कमिश्नर वाला सिस्टम और डिपार्टमेंट्स जो उन्होंने दिए थे उसको हमने 3 और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है. लेकिन जो पावर्स होते थे या जो इनिशिएटिव होता था ऑफिसर्स का, जो 18 ग्रेड का या 19 ग्रेड का या डिप्टी कमिश्नर
का या कमिश्नर का, वो सारे सेंट्रलाइज हो गए। द टेंडेंसी, हमारा कल्चर ये है कि entire concentration, whether by our nature, even appointment of a PN, वो बैन होता है, उस पर कोई आप फंडिंग डिसीजंस नहीं करते, हर चीज जो है everything goes to the chief minister. It's a highly centralized system. So that is one reason the system doesn't work. So there on the spot decisions जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, वो हो ही नहीं सकते, and that is common to the entire country, but more I think specifically सिंध में जरा कुछ ज्यादा है प्रॉब्लम, मुझे लगता है, in terms of governance. Next. So as I said, poor response for relief, rescue, dewatering owing to poor governance. I've already talked about excessive centralization है एक तरफ, और फंडिंग जो है वो तो इतना प्रॉब्लम है, सारे फंडिंग आउटसाइड बजट या इमरजेंसी के लिए कोई फंड्स हमने नहीं रखे होते, वो फिर सारे चीफ मिनिस्टर अप्रूव करता है। उसके अप्रूवल के बाद भी मैं आपको बताऊं कि इन मेनी केसेस महीने लग जाते हैं, इवन आफ्टर अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर, टू गेट फंड्स रिलीज फ्रॉम, अगर डेवलपमेंट के हैं तो थ्रू PND, और फिर फाइनेंस के हैं तो फाइनेंस, और वो सारा अभी तक हमने, पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, अभी भी हमने मैनुअल रखा हुआ है, और मेरे ख्याल में मैनुअल इसीलिए रखा हुआ है बिकॉज दैट गिव्स अस अथॉरिटी, दैट गिव्स अस डिस्क्रेशन, हम वी डोंट वांट टू डू अवे विद दैट डिस्क्रेशन। तो ना हम इवन एक तो हमारे जो क्वालिटी ऑफ पीपल जो हम अपॉइंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, वो ज्यादातर उन लोगों को रखते हैं जो हमारे साथ पर्सनल लॉयल्टी होती है रादर देन उनकी कॉम्पिटेंस। दूसरे, उनको भी हम एम्पावर नहीं करते, और वो डरते भी हैं बिकॉज ऑफ द नैब एंड बिकॉज ब्लेम गेम तो बहुत ज्यादा है हमारी सोसाइटी में। तो ये चीजों की वजह से टू मेनी डिपार्टमेंट्स दैट compete in lethargy and incompetence, operating in silos. Deputy commissioner, as I said, जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, और क्योंकि छोटी गवर्नमेंट्स होती थी अंग्रेजों के जमाने में, तो उनको उन्होंने मैजिस्ट्रियल पावर्स भी दिए हुए थे और डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेट भी करता था। बाद में जब लोकल गवर्नमेंट्स आई तो पावर शिफ्ट हो जाने चाहिए उनको। हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन वो वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हमने बिठाए हुए हैं। हमारे सिंध में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो गई, लेकिन उनको पावर ट्रांसफर नहीं करते हम। Then there is separate public health, irrigation departments, हर एक की अलग अलग एरिया है, आपस में हम कोलैबोरेट नहीं करते, डिसीजंस जो है इसलिए नहीं लेते कि वो हमारे ऊपर ब्लेम ना हो जाए, और ना हम एम्पावर्ड हैं। तो सारी जो समरीज हैं वो मिनिस्टर, इवन मिनिस्टर्स के पास भी पावर्स नहीं है, वो भी मजबूर होते हैं। मैंने तो देखा है, तो आई रिमेन्ड अ मिनिस्टर, उस वक्त फिर भी सूरत हाल कुछ बेहतर थी 90s, लेकिन अब तो सूरत हाल में देखता हूं कि सारी पावर्स जो हैं वो कंसंट्रेटेड हैं इन द चीफ मिनिस्टर। I've already talked about ये पूरा सिस्टम ऑफ NDMAs, PDMAs, उससे पहले रिलीफ कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होता था, ये ड्रेनेज डिवीजन I've already talked about, and no elected local governments. So all of that I think needs to be thought of. Next, please. Then I've already talked about कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी efficient हो गई है, हम टेक्नोलॉजी को लाना नहीं चाहते, because technology means less discretion, more transparency. That is something that we abhor. So lack of automation and use of technology, जो नदीम साहब आप को याद होगा, हमारा जो टास्क फोर्स था, आप एक साइड पे थे सिविल सर्वेंट्स, जो दूसरा साइड था, फर्स्ट थिंग दैट वाज डिसाइडेड इन दिस गवर्नमेंट रिस्ट्रक्चरिंग वन वाज टू ऑटोमेट, एंड एवरीबॉडी अग्रीड, द प्राइम मिनिस्टर अग्रीड। इनफैक्ट डॉक्टर इशरत ने मुझे कहा कि यू लीड इट। मैंने एक हफ्ते में पूरा इनको प्लान बना के दिया था, वो प्लान है, लेकिन दैट्स अ रियल केस स्टडी हाउ दैट मैटर हैज बीन डिलेड एंड हाउ इट वाज, यू नो, but having said that, I think वो थोड़े थोड़े पेस पे फेडरल गवर्नमेंट में
जो चीज 6 महीने में होनी चाहिए थी वो 2-3 साल में वहां पर कुछ हुई है, बट आई थिंक प्रोविंसेस में बहुत ही कुछ कम हुई है. बहुत ये ऑटोमेशन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन रियली ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट्स, लेकिन वो हम ऑब्वियसली करना नहीं चाहते. एंड देन ऑफ कोर्स वी आर ए नेशन, वी आर पीपल, डाइवर्स पीपल. हमारी स्ट्रेंथ इसमें होगी कि अगर हम कोलैबोरेट करें, बट वी डोंट कोलैबोरेट. एंड द वर्स्ट पार्ट इन द गवर्नेंस इज कि इस मुल्क में यू गेट अवे विद मर्डर. कितनी भी नेग्लिजेंस हो, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो, कभी आप देखें किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती. वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम where you get away with murder. So this is the crux of our governance is there has to be accountability for outcomes. हम नैब तो बना देते हैं, हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स बना देते हैं जो कि करप्शन को प्रमोट करते हैं rather than रिड्यूस करें, लेकिन there is no accountability for outcomes. And accountability for outcomes is very simple. You have to reward initiative, you have to reward performance, and you have to penalize non-performance, negligence, and corruption. So next, please. So I think this is my last or maybe second last slide. We know that Pakistan is one of the most vulnerable country. I think we are having one disaster, moving from one disaster to the other. Unfortunately, we don't learn from these disasters. We know that we have the largest number of glaciers outside of polar regions, so we are at huge risk. Sindh, of course, has existential crisis because it is the drain of the entire country, but northern areas are also hugely exposed because they are very close to these glaciers. And then Sindh, we have this, we have risk from rains, we have risk from melting of glaciers, we have risk from sea rise intrusion, and combination of all. Next, please. And of course, the worst thing is poor governance escalates all that crisis. So where this country has been governed, mismanagement of flood disaster, I think was no surprise to me, and I'm sure to many of you. We have mismanaged a lot. हमारे जो indicators हैं, economic and social indicators, they are a witness to how we have mismanaged this country. There is a national need for national dialogue to discuss the critical issues objectively, to prevent such disasters, to learn from disasters, to avoid such disasters in future. We need to improve our disaster management system. जो हमने बड़ा अच्छा laws बना दिए हैं, जारी लेकिन very flawed implementation. Unless fundamental issues of governance are addressed, expect more and bigger disasters. There is serious need to overhaul our disaster management system. Sindh especially needs to modify its approach to development and plan better drainage system to mitigate its existential crisis. There is also a need to rethink on water storage, जो जहाँ पर जो है बाकी provinces के साथ, I think we need to think of because when we have surplus water, that drowns us. We don't store it properly. I don't know कितनी हम capacity कर कितनी सकते हैं. It's a technical debate, but nonetheless, I think we need to objectively debate it. People of Pakistan and its leaders need serious rethink to change course. Business as usual is simply not an option. So thank you very much, Nadeem, for this opportunity. I think that's it from my side. I'm sorry I've taken longer. I plan to do it in 40 minutes, but I think I've taken 45 minutes or so. Thank you very much, Asad Shah. Nadeem Saab is basically traveling. His network is not properly working. That's why he handed over to me. So I think Asad Shah really wonderful delivered, and he very rightly justified with evidence that why international compensation is needed by Pakistan at this stage. I mean, and also he very rightly mentioned the weaknesses and governance issues and management related issues in Pakistan. I fully agree with that unless these issues will be resolved, so we cannot move forward. So whatever we will do, if our own house is not in right,
then I mean nothing will come out. So in that way, international donors are also reluctant, I think, to give donations to Pakistan because our management is very poor. So moreover, he also very rightly mentioned that we are very, I mean, reluctant to adopt the modern technology because we don't want to um, correct our own home. So we want to continue to follow the corruption. So I mean, now I will go back to the audience and please raise the hands, those who want to raise the questions. So I can see that you have very, I mean, give evidence that, especially when you are talking that China is, I mean, consuming almost 35 to almost 4 billion tons. 4 billion tons per 4 annum. billion tons of coals, and we are consuming only in millions. So जी और मुझे अनफॉर्चुनेट बात ये है, देयर इज आई थिंक वो कहते हैं ना कि आई वाज पार्ट ऑफ स्पेस इस पे जो फ्लड डिजास्टर पे हो रहा था, and some very knowledgeable ladies and gents talking about it. तो वो ये कह रहे थे कि हमारी COP27 में हमें बिल्कुल रिन्यूएबल्स पे जाना चाहिए और कोल और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए. तो आई ट्राइड टू इंटरवीन, उनसे तो मुझे उन्होंने बंद कर दिया, बिकॉज पॉइंट इज कि वो कहते हैं ये तो आप तो हम हमें तबाह कर देंगे, हम मर जाएंगे. ये जो है ना, बात ये है कि मरने में हमारी तो एग्जिस्टिंग जो जनरेशन है वो कहाँ जिंदा कहाँ है, हमारे 70-80% दे आर नॉट इवन लिविंग, एंड देन हमारा तो इम्पैक्ट ही बहुत कम है. दैट्स व्हाई. और आप देख लें एनटीडीसी का आप और बेसिक फर्क मैं आपको बताऊं, ये जो एनर्जी ने हमें बैंकरप्ट किया है ना, इस वक्त 5 ट्रिलियन का हमारा सर्कुलर डेट हो गया है. जो डेट है इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द कॉस्टली जनरेशन ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स. और फर्क ही आप इंडिया देखिए ना, वो 50 साल से अपना लोकल कोल यूज कर रहे हैं. दैट इज द, पूरी दुनिया ने 150 साल से सबसे ज्यादा जो पावर जनरेशन और एनर्जी का यूज है वो कोल से हुआ है. इट इज द चीपेस्ट रिसोर्स इवन टुडे वर्ल्ड वाइड. इस वक्त यूएस जो है वो भी 20% जो है ना कोल अभी भी यूज कर रहा है. Yes, even China and India have asked. China and India को उन्होंने मना कर दिया जी कि हम ये नहीं करेंगे. Yes, हम नहीं करेंगे. उन्होंने टोटली रिफ्यूज कर दिया कि अगर करेंगे भी बहुत स्लोली. उन्होंने कहा कि इट विल टेक अनदर 40 to 50 years, मतलब इसको 0. और हमें मुझे पता चला है कि हमने COP25 या 26 में हमारे क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने शायद कुछ ज्यादा कमिटमेंट्स कर दिए हैं कि हम रिन्यूएबल्स करेंगे. पता नहीं क्या क्या कमिटमेंट्स है डॉक्यूमेंट, बट आई वाज लिसनिंग आई डोंट नो हमारे क्लाइमेट चेंज के जो डिपार्टमेंट है उनको एनर्जी का कितना पता है, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड के रिन्यूएबल्स नो डाउट अगर आज बैटरी इन्वेंट हो जाए, और अगर क्योंकि सूरज जो है दिन में होता है ना, रात को नहीं होता, विंड जो है वो एक टाइम पे होती है, तो वो चीप तो हो गए हैं बट दैट डजंट प्रोवाइड बेस लोड. तो टेक्नोलॉजी वाइज मतलब ये है कि अभी भी आपको 70% 60% बेस लोड चाहिए. Yes. Moreover, initial investment is very high in those technologies. I mean, if we want to install. So, Muhammad Suleiman Sahab, please go ahead. Yes, sir. Sir, the briefing was very, very comprehensive. Lekin all aspects were addressed, but the technical aspects were not addressed. Basically, this disaster in Sindh, either on the right side or on left side of River Indus, it was the engineering failure. They had infrastructures to dewater through existing drainage system, or neither they upgraded as a lesson learned from 2010 floods. So this was, in my opinion, it was man-made, created the hazard and hazards. So I think this issue may also be addressed. कि कम से कम अगर 10 साल तक उन्होंने फ्लड 2010 के हिसाब से भी अपने ड्रेनेज सिस्टम को अपडेट नहीं किया, तो कम से कम अभी करें, वरना ये हर साल इस तरीके का डिजास्टर आता रहेगा. अभी भी जो 30% कहा गया है कि जी वो रहता है बाकी स्टेगनेंट वाटर, एक्चुअली इट्स नॉट सो.
more than 50% is still stagnant on the lands in the villages. So it's a great disaster shall be highlighted so much, and the engineering failures shall be addressed and shall be restored. Thank you, sir. थैंक यू चांडियो साहब। मैं बता दूं बाकी ऑडियंस के नॉलेज के लिए, सलेमान चांडियो साहब जो है इज वेरी नॉलेजेबल एंड he remained managing director of Karachi Water and Sewerage Board, one of the, I think, most reputed CEOs रहे हैं ये। और I fully agree, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था सलेमान साहब। एक तो I wanted to conclude this, and yes, engineering side, I think people like you would be in better position. But मैं तो common sense के लिहाज से मैंने बात की कि engineering failure था वो, and this was doable. But I think it requires more extensive discussion with people like you, how to address this, what should have been done. Thank you. I am at disposal of you, sir. Thank you. Mudassar Iqbal, please. Assalamu alaikum, sir. Like, you know, Well, it was a learning experience. You know, since we know, you know, climate change is intensifying worldwide, and we are not unique. You know that, and like our capacity to handle these floods, disasters is very minimal. So, what can be the priority areas, especially related to the urban planning and the, you know, that infrastructure, especially जो है जो इसमें river ways में जो है जो बने हुए हैं, तो इसमें कुछ some steps जो कि government ले सकती है to avoid you know that installing infrastructures in the way of floods, in the way of water, तो इसमें ताकि instantly लोगों की जान बचाई जा सके। अभी ये हो रहा है कि जी जहाँ पे भी जो है low lying areas हो, वहाँ पे जो स्पेशली जो फाइनेंशियली वीक लोग होते हैं वो वहाँ पे अपनी जो है वो कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं, और फिर जब डिजास्टर आता है तो सबसे ज्यादा डैमेज उन्हीं को ही होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड जो है कुछ एरियाज के ऊपर आप अगर कुछ एनलाइटन कर सकें। जी मुदस्सिर, थिंग्स आर वेरी सिंपल बट वी मेक देम कॉम्प्लिकेटेड। जैसे मैंने सबमिट किया कि एक्चुअली जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, हमने नेचुरल वाटर पाथवेज जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। जो रोड्स बने हैं उसमें प्रॉपर कल्वर्ट्स नहीं है, जो वाटरवेज हैं उसके बीच में टाउन हाउसेस बन गए हैं। हमारी जो अर्बन प्लानिंग है, इनफैक्ट अबाउट आई थिंक ईयर बैक देयर वाज अ सिंध हाई कोर्ट डिसीजन के इरिगेशन के जो लैंड्स हैं और ये जो वाटरवेज हैं वो सारे इंक्रोचमेंट रिमूव किए जाए। देयर वर फ्यू जजेस हु वर डूइंग दिस, और कुछ हुआ भी इन अपर सिंध, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर हमने उसको भी सबोटाज कर दिया जैसे हम करते हैं। तो बात तो यही है कि हमारे पास ना अर्बन प्लानिंग है ही नहीं ना। वी नीड यू नो प्रॉपर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, एंड पहली बात तो ये है कि इतनी सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस और इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं, उसको अगर हम रिमूव कर दें, एग्जिस्टिंग जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अगर हम ओवरऑल कर दें, अच्छी खासी एरियाज में ड्रेनेज है जो कि चोक थे और वो सिस्टम चल नहीं रहा था। और उसके साथ जाहिर है ये सिस्टम हमारे जो ड्रेनेज है वो 30-40 साल पहले का बना हुआ है, तो जो पॉपुलेशन बढ़ गई है और जो ये जो रिस्क है क्लाइमेट चेंज का, उसके हिसाब से वी हैव टू रीडिजाइन और ड्रेनेज सिस्टम, एंड वी नीड एन इंजीनियरिंग सोल्यूशन। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, यू नो। ठीक है, वी हैव यू नो these risks, we are vulnerable, but then there are countries like Holland which is below sea level. हम तो sea level पे हैं, वो तो 7-8 feet below sea level है, but they have made the excellent system of you know interconnecting their river and canals, so that when there is high tide, water comes in the canals. When there is low tide, the water goes in the sea. So we need there are already schemes like left bank outfall drain, जिसका design शायद हमने flawed बनाया था, right bank outfall drain. So we need to improve our drainage, and of course we need to improve
our disaster management systems. There is one question from Dr. Dr. R.A. Maiman, please. Sir, one thing you said that when the Tharkol was started 20-30 years earlier, but unfortunately not happened. Sir, can you explain what is the current position of electricity production from the Tharkol? How much party with the मतलब submit their जी जी इस वक्त मेरे ख्याल में तकरीबन 1000 मेगावाट अभी हबको का एक प्लांट आया है, तो वो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारा जो और एक लकी का जब चल जाएगा 2 प्लांट्स, तो ये मेरे ख्याल में हम कोई 1500 या 2000 मेगावाट पे चले जाएंगे। तो ये जब ये 660 मेगावाट थी जी टोटल मैं कितनी परसेंटेज है ये इसकी हमारे गेट टोटल आप देखें ना, हमारी जो से अराउंड वैसे तो हमारी जनरेशन कैपेसिटी जो है वो 40-45,000 मेगावाट है, लेकिन जो इफेक्टिव चलती है वो 30,000 मेगावाट है। तो हम अभी भी हम अगर हम 2000 मेगावाट पे पहुंचते हैं इनके बाद, तो वी विल नॉट बी इवन 10% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। और मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जो जब 660 मेगावाट पे हम पहुंचे थे, ये जो मैंने फिगर्स आपको दी, 3 रुपीज जो हमारी कॉस्ट आ रही है थर्कोल की, फ्यूल कॉस्ट, और मेन कॉस्ट जो है फ्यूल की है जनरेशन में, तो हमारी जो कोल पर टन कॉस्ट है, और ये ऑब्वियसली ज्यादातर लोकल करेंसी में, फॉरेन करेंसी में नहीं है, और फॉरेन करेंसी इज द सीरियस प्रॉब्लम हियर, तो वो हमारा कोई $55-60 पर टन है हमारी कॉस्ट, कंपेयर टू इम्पोर्टेड कोल जो है वो $400 तक हो गया था। और ये अब जो हबको के प्लांट्स आ गए हैं, तो ये तकरीबन ये $30-35 की उसमें चला जाएगा, और जब लकी सीमेंट यूज होगा तो वी विल बी बिटवीन $25-30। तो जैसे जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, अभी तो एक ब्लॉक का हम पूरा यूज नहीं कर रहे हैं जिससे 5000 मेगावाट हो सकते हैं। ब्लॉक 1 अब तैयार है, अगर वो भी इस्तेमाल आ गया तो आई थिंक इस कोल से वो इतना सस्ता हो जाएगा कि आप उससे उसको फ्यूल डीजल बना सकते हैं, आप उससे फर्टिलाइजर बना सकते हैं। सो दैट इज अ ह्यूज पोटेंशियल जिसको हमें यूज करना चाहिए था, बजाय इसके हमने इंपोर्टेड कोल पे हमने साहिवाल में इंपोर्टेड कोल प्लांट लगा दिया हमने, मतलब और आई मीन दैट इज द रीजन, सबसे बड़ा जो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, it is because of the fuel import. Yes, very rightly mentioned, Asad साहब। तो मतलब जो है ना जी, आई फुली एग्री, मतलब जो है ना जी, हम जबकि हमारा अपना कोल इतना मतलब हमारे पास सरप्लस में पड़ा है, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, हम इंपोर्टेड कोल पे, जबकि हमारे पास फॉरेन मतलब रिजर्व पहले ही मतलब सीरियस क्राइसिस में है हम, इसके बावजूद मतलब वी आर डिपेंडिंग खाली ऑन दैट। So Mohammed Suleiman साहब, again you want to ask something? Yes sir, एक चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, राइट सिंध को और लेफ्ट सिंध में सिर्फ एक ही मेन जो डिस्पोजल है आरबीओडी और एलबीओडी, दोनों की डिजाइन कैपेसिटी सिर्फ 3400 क्यूसेक है आरबीओडी की और 6000 क्यूसेक है एलबीओडी की, जो सारे सिंध का पानी फ्लड का या बरसातों का या ऐसी डिजास्टर रेन शावर का, वो डिजाइन जो वो दोनों बने हुए हैं वो सिर्फ सेलाइन वाटर के लिए, जो सीम नाले होते हैं जो अंडरग्राउंड जमीन से लेते हैं कि वो लाइन साल्टिश ना हो, उसकी सिर्फ गुंजाइश है। वेयर एज ये जो फ्लड्स आती है या ये अभी 10 वाली या अभी 2022 वाली, ये 60,000 क्यूसेक की क्वांटिटी थी। अब ये कहना कि 60,000 क्यूसेक की क्वांटिटी उसी ड्रेन के 3400 या 4000 क्यूसेक के अंदर से फटाफट भी पास हो और हफ्ते में निकल भी जाए, लोगों के घर भी ना टूटे, लोग मरे भी ना, तो ये तो सिर्फ हम जानी बूझी हमारे इंजीनियर्स ने ये सारा डिजास्टर क्रिएट करा हुआ है। देखें 350 किलोमीटर मंसूर से लेके जैकबाद तक डिस्टेंस है, और उसी एमिनी ड्रेन में आरबीओडी में बलूचिस्तान और सिंध का दोनों का बरसात का पानी था, जो बलूचिस्तान की 21 डैम भी टूटी थी उसका भी पानी था। अब मुझे पता है 350 किलोमीटर वही 3400 क्यूसेक के
में कब तक गुजरेगा, तब तक तो सारा फ्लड हो गया, सारे जिले, सारे घर टूट गए, सारे तबाही हो गई। तो मेरा एक प्रपोजल ये है, जब 350 किलोमीटर दरिया स्लोप में आ ही रहा है और वही स्लोप अवेलेबल है सब जिलों के लिए, तो इसमें कम से कम 3 स्पेसेस देने चाहिए, एस्केप्स देने चाहिए। एक जैकबाज से इंडस, और दूसरा जो है कि हमल लेक से लाकाना से इंडस, एक दादू से इंडस। ये सचमुच एक हफ्ते में सारा पानी भी निकाल लेंगे। वो जो लोड सिर्फ 34 क्यूसिक का 350 में आ रहा है, वो भी एक लोड कम हो जाएगा हर पीस में, और ये फॉर लॉन्ग लाइफ डिस्पोजल हो जाएंगे। और उसको आप दोनों एंड पे, दरिया सिंध के बंद के एंड पे और ड्रेन के एंड पे आप रेगुलेटर दे दे, जब चाहे जिसको यूज करे, बरसात में यूज करे, फ्लड में यूज करे, बस यूज न करे। लेकिन सिंध को क्या हर साल डुबवाना का प्रोग्राम है? क्या सिंध में हर साल ये एड आवे और इस एड से पेट भरे लोग जो मुस्तफीज बनते हैं, वो गरीब को तो कुछ नहीं मिलता। अभी बंद पे पड़े हुए, कोई भी जावे देखे तो उनके पास न कोई टेंट है और न कोई फूड है। और अब ये कह रहे कि जी आपको 4 साल में एक मकान बना के देंगे। अरे भाई, वो अपनी जमीनों पे बच्चों के साथ बैठ के वो काम करते हैं खेती बाड़ी का, वो 4 साल तक वो उधर फिर अंडर स्काई बैठे रहेंगे क्या? और दूसरी बात, एक आरसीसी मकान, वो जो तपता है धूप में, वहां पे दादू में, जैकबाद की गर्मी में, वहाँ आरसीसी छत में तो वो मर जाएंगे, रहेंगे ही नहीं। भाई जो उनके क्लाइमेट के जो हाउसेस बने हुए थे, आप वही बना के दे दो, ईंटों की चुनाई करके दे दो, उसमें कमी नहीं होती। और उसके बाद उसकी छतें टीयर गार्डर्स की रखे, ईंट की टाइल ऊपर रख लो, ऊपर 6 गोबर मट्टी डाल दो, वो उसी में खुश है। और सारी जिंदगी बड़े में बड़े लोग, करोड़पति, अरबपति भी इस तरीके के घरों में वहां रहते हैं। तो मेरा very ख्याल right. ये है कि ये बहुत मिसप्लानिंग हो रही है। The valid comments, चांडू साहब, I think काफी, I agree, काफी valid comments हैं। These matters need to be discussed. मैं आपसे agree करता हूँ। Yes. Dr. R.A. Memon, I think he want to ask again something, please. हाँ सर, एक चीज और पूछनी थी आपसे और थोड़ी सी बतानी भी थी। ये जो एनडीएमए और पीडीएमए के पास आपने बताया कि 2010 के बाद जो अकार्ड मंजूर हुआ था, कोई और पॉलिसी है ही नहीं तो डिजास्टर को मैनेज करे। मुझे ये पता है कि सर, मैंने इनसे अभी बात की थी एक प्रोग्राम के लिए, तो ये बता रहे थे कि इनके पास अभी बजट ही नहीं है कि ये विजिट करें, और 100,000 मिलियंस की बजट इन्होंने खर्च कर लिए। तो समझ नहीं आता कि सर ये पैसे जाते कहाँ हैं। एक चीज आपसे ये पूछना था कि इसके पीछे रीजन क्या है, और ये एबल क्यों नहीं है कि ये कोई पॉलिसी बना सके और डिजास्टर्स को मैनेज कर सके। काइंडली कमेंट इट सर। जी मेमन साहब, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। बात यह है कि अपेरेंटली इट सीम्स कि ये डिजास्टर हम एक तो ये है ना कि पाकिस्तान की जो हमारी जो मुल्क की सूरत हाल है, हम क्राइसिस मैनेजमेंट में ही रहते हैं ना, कि हमने IMF प्रोग्राम को मैनेज करना है, हमने डे टू डे बेसिस पे। सो डिजास्टर मैनेजमेंट तो मेरे ख्याल में हम सोचते नहीं है ना, हम ये सोचते हैं डिजास्टर नहीं आएगा, वी होप फॉर द बेस्ट, और आएगा तो उस वक्त देख लेंगे। अभी तो हमारा अभी का जो प्रॉब्लम है उसको हल करें ना। तो इसकी somehow we don't, I think, appreciate the reason or the importance and the criticality of disaster management system कि क्यों इसको सही होना चाहिए, उसको हमने फोकस नहीं किया। जब सर पे पड़ती है, जब वो अर्थक्वेक आया था तो फिर उस वक्त हमने महसूस किया था, और उसके बाद ये फिर भी हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मर्तबा तो मुझे इतनी हैरानी है कि इतना बड़ा डिजास्टर है। आप देखें कि दिस सब्जेक्ट ऑफ डिजास्टर, इतने सारे लोग, आपके वर्चुअली 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई है, एंड आवर लीडरशिप इज लीस्ट कंसर्न। जो कुछ थोड़ी ज़्यादा फोटोग्राफ्स के लिए कुछ जगहों पे
2-4 दिन प्राइम मिनिस्टर या कुछ लीडर्स गए, अदरवाइज दे आर बिजनेस एज यूजुअल. तो मुझे तो ये लगता है कि द रीजन व्हाई वर्ल्ड इज नॉट गिविंग अटेंशन टू our problem or the seriousness of problem is because we are ourselves. Look at our media, look at our civil society. I mean, it was only for a few days that this disaster was even discussed. Otherwise, most of the society, most of our people who are outside this disaster and our mainstream media is least concerned about it. Very right to mention that. That's the problem. So, Asad sir, thank you very much. I think that's I mean, really wonderful delivery and very, I mean, overall coverage of the issue. So you have covered from the problem to the management related issues, and also you touch the international community, that why basically it is our right to I mean to support. It is their responsibility rather to support Pakistan at this stage, because they are the prime responsible of these things. So although Pakistan is delivering a very contributing a very minor part of carbon emission in Pakistan basically. So the major part, because they have developed their nations by polluting the environment, when it comes to us, now they are putting different kind of sanctions that you can't do it. So although still our contribution is, I mean, are almost very minimal. So anyway, thank you very much. I mean, you have really gave a wide coverage to the problem, and thank you so much.